हेलो स्टूडेंट्स आमे आज ये वीडियो रे पढ़िबा रेंज ऑफ ए फंक्शंस। लास्ट वीडियो रे आमे पढ़िथिले डोमेन ऑफ ए फंक्शंस। आज एथिरे आमे डिस्कस करबा व्हाट इज द रेंज ऑफ ए फंक्शंस एंड हाउ कैन यू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस। केमती कोर कोनटा रूल अप्लाई करिकरी गोटे फंक्शन रो रेंज बाहर करबा। सपोज लेट y equal to fx is a function. So a function रे set of all x is lies in the domain. Domain भितरे x रो value गुडा को अच्छी जो image बाहरिबो that is set of all fx सेटा होची y. So y रो value जा बाहरिबो that is called the range. So simply range is a set of all f images. Set of all f images. Or mathematically also we can say range of a function. Range equal to set of all y for which or such that x is defined. We take those real value of y for which x is defined, or in other words we can say y is fx such that x is defined. X is defined means x belongs to domain of f. Means if x is an element of a domain, set of all fx is known as the range. Or we can say set of all y such that x is defined. This is called the range of a functions. ताले गोटे फंक्शन जदि हमको दिया जाइथिबो तारो रेंज केमती बाहर करबा कोनटा होची रूल टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शंस। तो रूल टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शंस। तो आर फास्ट रूल होची आमे जो भी फंक्शन दिया है ताको आमे नबा y। फर्स्ट स्टेप लेट y इक्वल टू fx. Suppose fx is the given functions, we take this as y. Then from this equation we convert x equal to function of y. We'll take y is a function of x, and from this equation we have to find x equal to the function of y, and from this equation we can conclude the value of y. So determine the value of set of values of y for which x is defined. Then range is the set of all y. Then range f is equal to set of all y where x is defined. So this is the general rule to find the range of a function. So एबे हमें गोटे क्वेश्चन नबा बुझा पड़िबो. So गोटे क्वेश्चन अछि find the range of fx equal to x square minus 1 by x square plus 1. Okay. So हमें आरो रेंज बार करिबा. तो आर डोमेन तो होची ऑल रियल नंबर्स कहीं ना डिनोमिनेटर केबे भी जीरो हबनी एठी बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. सो हियर द डोमेन इज द ऑल रियल नंबर. सो हमें रेंज बाहर करबा. रेंज पई फर्स्ट स्टेप जो भी फंक्शन गिवन अछि ताको हमें y नबा. सो y इक्वल टू
x square minus 1 by x square plus 1, and from this equation we have to convert into x in the function of y. So just cross multiply, we'll get x square y plus y equal to x square minus 1. Taking all the x square on the left side, that is x square y minus x square equal to minus y minus 1. X square taking common, so y minus 1 minus y plus 1. Then x square equal to minus y plus 1 divided by y minus 1. X square equal to y plus 1, 1 minus y. I multiply the minus sign in the denominator. So this x equal to plus minus under root y plus 1 by 1 minus y. Now see, this x is defined if this is greater than equal to 0. This x is defined if the expression under the square root should be greater than equal to 0. X is defined if y plus 1 divided by 1 minus y is greater than equal to 0. Then एटा को जिते बड़ा में सॉल्व करबा ओबिकर मेथड रे फास्ट देखिबा में लीडिंग कोएफिशिएंट्स एटी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव अछि तो तक पॉजिटिव बनेबा y plus 1 by y minus 1 is less than or equal to 0. माइनस साइन मल्टीप्लाई करली डिनोमिनेटर रे माने बोथ साइड रे, सो इट आसी गला y minus 1. देन आमे ड्रा करबा नंबर लाइन दैट इज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, y plus 1 एटा आसला minus 1 एटा आसला plus 1. जेतु डिनोमिनेटर रे 1 अच्छी 1 पकेले डिनोमिनेटर 0 हो जिवो तो 1 को आमे ओपन रखिबा, न्यूमरेटर को -1 रखिबा, राइट साइड रे स्टार्ट करिबा पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव. सो इठुर आमे कंक्लूड करछु हमर दरकार होची नेगेटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू आसुची -1 रु 1 भितरे, सो द y बिलोंग्स टू -1 to 1. Now this x is defined if y lies in between -1 to 1. The set of all these values is called the range. Since y lies in the set -1 to 1, so range equal to -1 to 1. This is one questions जो तरी के हमें गोटे फंक्शन रो रेंज बाहर कले. सेमती हमें आ गोटे क्वेश्चन नबा आर रेंज बाहर करिबा fx इज अंडर रूट x minus 1. तो सॉल्यूशन लेट y equal to f of x equal to x minus 1 the root over. Now see this expression is greater than equal to 0. ये होची 1 इक्वेशन 1. कहीं कि ना देखो एटा स्क्वायर रूट अछि, स्क्वायर रूट पूर्वरु किछि साइन लाइन माने सेटा होची पॉजिटिव बोली हमें कंसीडर करिबा. सो y इक्वल टू अंडर रूट x minus 1. ओके, फिर ए इक्वेशन रु हमें x इक्वल टू y फॉर्म रे बाहर करिबा. स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स y स्क्वायर इक्वल टू x minus 1 देन x इक्वल टू y square plus 1. Now see this x is defined for any value of y. कहीं ना हमें y पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ भी नबा तो x रो वैल्यू डिफाइंड है परिबो. सो इथुरा में कंक्लूड करछु y इज ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू r. दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. दिस इज इक्वेशन 2. So from 1 and 2 we consider. Now see in the equation 1 we find the value of y is more than 0. This value more than 0. But in case of equation 2 we find the value of y is minus infinity to plus infinity. But what is the common in between 2? 0 to infinity. So a common value जे दी जन को satisfy करची सेटा हबो हमरो range. So from 1 and 2 we get
range f equal to 0 to infinity. So ए फंक्शन रेंज है 0 to infinity. सेमती आमे आ गोटे क्वेश्चन नबा. थर्ड क्वेश्चन, fx is bracket x minus x. bracket x होची greatest integer function. bracket x means it is a greatest integer functions. greatest integer functions. सो आर वैल्यू सब गोटे इंटीजर ही आसे. तो मु डिटेल्स जिते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेबी से विषय डिस्कस करी. तार ग्राफ कौन हम, तार रेंज कौन हम, तार डोमेन कौन हम. बट एबे खाली आम ये एक्सेप्ट करते जे ब्रैकेट एक्स वैल्यू सब गोटे इंटीजर. एक्स इज एनी रियल नंबर्स. सो रियल नंबर रु इंटीजर कले फ्रैक्शन आसे. बट ये उल्टा अच्छी जेतु रिभर्स अच्छी, तेणु ए केस रे आमे रेंज लिखिपर -1 to 0. -1 to 0. -1 is open and 0 is close. कहीं आम जेकोसी इंटीजर जदि नबा, कहीं ये फंक्शन डोमेन हूँ ऑल रियल नंबर. आम जिते इंटीजर गुड़ा नबा तार वैल्यू सब 0 ही आसो. जितेबले कौन सी रियल नंबर नबा तार वैल्यू -1 रु 0 भितर आसो. फॉर एग्जांपल आम ये देखिपर, सपोज मु पचारि 4.5 वैल्यू. 4.5 ब्रैकेट माइनस 4.5. 4.5 ब्रैकेट हूँ 4 माइनस 4.5 जो वैल्यू का आसूँ -0.5. तो जो -0.5 आसला सेटा लाइज करुच्ची -1 रु 0 भितर. सेमती आम जदि कौन सी इंटीजर गोटे पकेबा f5 जदि पकेली तो 5 ब्रैकेट -5, तो ये 5 - 5 दिस इज इक्वल टू 0. तेणु आम जेकोसी गोटे फ्रैक्शन पकेले तार वैल्यू सब गोटे नेगेटिव नंबर आसो. सेटा -1 रु 0 भितर थी. आ कौन सी इंटीजर पुट कले तार वैल्यू 0 आसो. सो आर रेंज है -1 to 0. सेमती आम अनदर क्वेश्चन नबा. लेट function is given function is x by 1 minus x. let y equal to x by 1 minus x. आपको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा तो y minus xy equal to x. तापरे हमको x equal to y फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा दरकार. सेति पई सब x को गोटे साइड को नै जिबा. xy plus x equal to y. then taking common x तो y plus 1 equal to y. then x equal to y by y plus 1. Now see, this x is defined if y plus 1 is not equal to 0. That means y is not equal to -1. तो माने we can take all values of y except -1. So this range means set of all values of y. Then the range of the function is all real number except -1. Okay. Next question. Another question is given. fx is x by 1 plus x square. Same rule. आमे function को y नबा, x को y form रे express करिबा. So let y equal to x by 1 plus x square. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू x. तो आपको x इक्वल टू y फॉर्म रे एक्सप्रेस करिया को आम एमती करिबा x स्क्वायर y माइनस x प्लस y इक्वल टू 0. नाउ सी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हियर a is y, b is minus y. ओके. सो ये जो इक्वेशन अच्छी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एटी a अच्छी आमर y, b अच्छी -1, c अच्छी y. सो एटा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. तो आम ये फॉर्मूला पकई परिबा. तो x इक्वल टू माइनस b माने -1 हेले एटा +1 हे जिवो. +1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4y स्क्वायर
divided by 2a मतलब a is y so 2y कहीं ना बाहर कर फॉर्मूला होची x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a रूट ओवर बाय 2a. Now see this x is defined if condition y is not equal to 0 ये गोटे conditions denominator 0 नहले defined हो परिबो and another condition जो under root भीतर जो अच्छी 1 minus 4y square this will be greater than equal to 0. So एटी देखो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव अच्छी ताको हमें पॉजिटिव करिया पाए माइनस साइन मल्टीप्लाई करिबा तो 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 तापर तक फैक्टराइज करिबा तो 2y प्लस 1 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 फैक्टराइज परे हमें इनइक्वालिटी केमती सॉल्व करू गोटे नंबर लाइन ड्रा करिबा इच फैक्टर को इक्वेटिंग टू 0 करिबा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हेले y आसुची माइनस 1/2 एथरू y आसिला प्लस 1/2 आमे ताको असेंडिंग ऑर्डर रे अरेंज कर देले तापरे एक्सट्रीम राइट रू आमे सब बेले स्टार्ट करू पॉजिटिव देन दिस विल बी नेगेटिव देन दिस विल बी पॉजिटिव अल्टरनेटिवली साइन एथि हबो जेतु समस्तंकर पावर ऑड नंबर अछि सो ओबिकर मेथड कोची आमे एमती अल्टरनेटिवली साइन नबा तो एठी जेतु नेगेटिव आसुची त आमे कहि परिबा y लाइज करूची belongs to minus 1 to plus 1/2. Okay, but here I find the ek number conditions y is not equal to 0 and 2 number conditions minus 1/2 ru 1 देखो एटी minus 1/2 ru 1/2 भितर 0 आसी जिवो बट एटी मना करा होची जे y 0 हबनी सो दी जन को नेले हमर रेंज बाहरिबो एतिर को minus 0 माने ई सेट minus 0 सेट और आम लिखि परिबा माइनस 1/2 कमा 0 ओपन यूनियन 0 ओपन 1/2 so from 1 and 2 range equal to minus 1/2 to 1/2 minus 0 or you can write minus 1/2 to 0 union 0 to 1/2 this is the range of the functions. Okay, I mean next outer question nova another questions fx is